Hello students, so I'm going to explain you this question. Let me read the question for you. A small particle traveling with the speed u, okay, towards right, fine, collides with a disk of equal mass as shown in figure. The center of the disk is located at a distance root 3 r by 2 away from the direction of motion of the particle. Okay, so basically as you see in the figure, okay, let me just make this figure in my page and then we will start. So basically usual things you have to find out. You have to find out the angle of deviation. You have to check for how much kinetic energy is lost. Basically B, C and D part is just single question. You just it has multiple interpretations. Okay, कई सारे तरीके से आपको सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है. Otherwise this is just only two questions. Okay, let me get started. Okay, so you have this maybe let me just okay, fine. So you have this disk, all right, and let me just, okay, I'm not going to make any straight lines. So there's this particle which is going at speed u, and what is the distance? This thing is root 3 r by 2, fine. And of course the r is what? Radius of this disk. Now mass of this particle and mass of this disk is same. Okay, so in the question it doesn't talk about friction, which changes everything. Okay, so as given this is JE question and even in advance, I don't think that part of it is in your syllabus, in 12th standard syllabus, right, where friction is there due to collision, there is going to be rotation and etc. That complicates things. I'm not sure if that is in your syllabus, so just check once. So fine, let me focus on this particular question. Okay, so question does not talk about friction, तो हम friction क्या करेंगे? Assume करेंगे कि friction is 0. All right. Now let's say in the horizontal direction it reaches where? Somewhere here. Okay, this particle, and this is your, sorry about this, वो ज़्यादा बेटर बनाने के चक्कर में और ख़राब होता है. Fine. So this is your I'm going to assume as E1 cap, unit vector in this radial direction, and I'm going to assume this as E2 cap. By the way, so I have assumed E1 E2 in this direction, which means if your sign convention is different, अगर आपने E2 cap जो मैं माना हूँ उसके अपोजिट में if you are assuming, then your things your sign convention will accordingly change. Okay, so fine. So what actually happens is this is so this particle, when it collides with the disk, it is going to change the momentum of the disk, okay, along the line of action. Okay, and what is going to be the line of action? Line of action is going to be the E1 cap, which is nothing but the radial vector. Okay, I hope you understand. Now because friction is absent, okay, friction is absent, there is no force or no impulse is going to act along E2 cap. Okay, so momentum, so basically in general here, because friction is absent, so momentum is going to be conserved here, right? Not kinetic energy, because for inelastic collision, and this coefficient of restitution is given to you as half, so kinetic energy is not conserved, but because friction is 0, then your momentum is conserved. So along E2, what actually happens is there is no impulse going there, because all the change in momentum is force, so impulse acts basically in the direction of force, and all the force is going to act
along the line of action. And when this 1D kind of object is going to collide with this 2D disk, this is what is going to happen. And line of action is nothing but the radial vector. I hope you understand things. Now this became very very simple problem. इतना ही करना था इसमें, ठीक है. Rest of the thing is just math. Physics was just this much. To understand that everything is going to the change in momentum is going to occur in this E1 cap direction. Okay, for E2 it is not going to, this force with which this particle is colliding is not going to change anything in E2 cap direction. Okay, now okay, so what actually happens, what we are going to do here is little bit of manipulation here to convert it into 2D vector by taking the component of this u velocity into this E1 and E2 cap. So when you take, by the way, how much is this, you can easily find out. Like I said, it's all math now. So this is sine theta. If you will take sine theta is this root 3r by 2 upon what, r, if you are considering this triangle, this triangle. So theta is going to be 60 degree. If this is theta, this is also theta. And what we are going to do here is we are going to have this, I can explain it later. We are going to have a unit vector E1 cap in the direction of x and y. This is our x. Okay, let me make this with some other color. Okay, maybe this one. So this is our x and this is our y. So if I want to go from if I want to go from E1 cap to x and y, what will I do? See, E1, if just think it like this, E1 cos theta, right? And E1 cos theta, if you take horizontal component of this vector, it is going in minus x direction. So it is minus cos 60, comma, and vertical component is in y direction, that is sin 60, right? And if I take E2 cap, again what will happen? See, if this is theta and this is going to be what, 90 minus theta or not? So E2 cos 90 minus theta perfectly aligns with x direction, and that becomes sin 60 cos 90 minus theta sin theta, and this vertical becomes sin cos 60, right? You can also think of it as radial vector and tangent vector are perpendicular, so you can find normal vector of E1 cap. So basically E1 cap dot E2 cap is 0. Alright, why I have done this I will explain almost at the end, okay, when we will be finding out velocities. Basically to give you a hint, you are coming from this xy coordinate, let's say for this particle, to this E1 cap and E2 cap direction, okay, and E1 cap being the line of action. Okay, now what I am going to do is, u I am going to assign as initial velocity, okay, and v I am going to say final velocity, and I am going to denote p for particle and d हम कह देंगे disk, capital P or small p, whatever you want to choose. I'm not going to focus, so I may choose capital or small interchangeably. Okay, उसको change करके कुछ भी लिखा जा सकता है, fine. And I'm going to say 1 to the E1 cap and 2 to the E2 cap. So basically वही x और y, एक बार x में आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, एक बार y में लगाना है, those things, right? So let's do it. Let me take one equation for this coefficient of restitution. Coefficient of restitution is what? If I take final velocity of what? And I'm doing this in one direction, E1 cap.
Okay, so E, and this has to be done only along the line of action. Okay, because perpendicular to it is not going to change anything. So v2, sorry, v is the final, so final velocity of the disk 1 and d minus v along one e1 direction particle upon u is the initial velocity of particle minus u in the initial velocity of disk. Now disk was at rest, so this u1d is 0, right? 1 denotes direction, so make note of that, and p is the particle, and u1p is okay. Now let me find out u1p. so u1p कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, this is u, and in this one e1 cap direction u cos theta हो जाएगा कि नहीं, u cos 60, that is u by 2, but minus or plus, minus because I have assumed radially outward to be positive. Fine. And what else, what about u2p? u2p yani velocity of this particle in e2 direction. u cos theta is this e1 direction and u sin theta, so that is going to be u root 3 by 2, that is positive. Okay, similarly let's note down for disk, u1 disk is 0 and u2 disk is 0. 2 is the direction, 1 is the direction, d is the particle and all. Okay, so because disk is at rest initially, u is initial velocity, so now just put those values. So you will have equation u1d, sorry, v1d minus v1p is equal to e is half, right? So, and this is minus u by 2. This is your first equation. Now in e1 direction your energy is conserved, sorry, not energy, momentum is conserved. So again m1 u1 for particle. So initial momentum in first one in e1 cap direction is how much, m1 u1p, that is minus u by 2 plus m2 which is same into u1d, that is 0. Final momentum in one direction is how much, m into v final velocity is disk plus m into v1p, right? M is cancelled out, I have just written for bookkeeping. Fine. So v1d plus v1p is equal to minus u by 2. This is your second equation. Now just let's find out things from equation 1 and equation 2. Just add them. What will you get? v1d, 2v1d is equal to, this is how much, minus 3u by 4, and this v1d comes out to be minus 3u by 8. Final velocity in e1 cap direction for the disk. Alright, now once you have v1d you can find out v1p, and v1p you will have how much, v1p is equal to minus u by 2 minus v1d. So from here you will have 4 minus u by 8. Okay, now you have this v1p. Now tell me what about in second direction? So if momentum, no impulse is applied in second direction, so what is v2p? v2p is going to be, see, final velocity in the e2 cap direction for the particle remains same, root 3u by 2. Okay, and v2d again it remains same. Okay, velocities remain same. Fine. So again you have, let me just circle them somehow so that you know this is important, this is, and this. Now let's recreate the final velocities. So when you recreate the final velocities, what will happen? So final velocity we are only interested in particle velocity and disk, yeah, that's fine. So particle velocity is going to be final, right? So vp,
right, is equal to Vp is how much? In 1, that is what? Minus u by 8 E1 cap plus V2P, that is root 3 u by 2 E2 cap, right? And what is the disk Vd? Vd is going to be how much? V minus 3u by 8 minus 3u by 8 in the direction what? E1 cap. Alright. Alright. ठीक है. सो अभी हमें क्या करना? ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू दैट इनिशियल थिंग जो मैंने बताया था, ये यूनिट वेक्टर. बेसिकली इन योर क्वेश्चन, if I go in the first part, what is saying? Sign of angle of deviation of the motion of the small particle due to collision. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल का डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, वो आप ऐसे कैसे निकालोगे बताओ? E1 और E2 निकाल भी लोगे तो E1 और E2 के रिस्पेक्ट में निकाल पाओगे. ठीक है. सो ईजिएस्ट थिंग, this may look like mathematically complicated, but easiest thing is to come to this x and y coordinate. Okay, then everybody knows ki tan theta is y component upon x component. You can easily find out. So just take this into your memory. Minus cos 60 and sin 60. Okay, and sin 6 you can take minus half comma root 3 by 2, and this is root 3 by 2 comma half. Okay, let's just put these values there. सो यहाँ पे रखोगे जब, तो क्या हो जाएगा? माइनस यू बाई 8 एंड माइनस हाफ कॉमा रूट 3 बाई 2 प्लस ये हो जाएगा रूट 3 यू बाई 2, और ब्रैकेट में क्या था? ओके, आई ऑल्सो फॉरगॉट. रूट 3 बाई 2 एंड हाफ माइनस रूट 3 बाई 2 एंड हाफ. ठीक है, तो वेक्टर का वेक्टर ही जोड़ सकते हो. तो ये कितना आ जाएगा? u बाई 16 प्लस ये कितना आ जाएगा? 3u बाई 4 कॉमा ये x कैप आई मतलब x डायरेक्शन में आ गया, और इधर कितना हो जाएगा? माइनस u रूट 3 बाई 16 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? u रूट 3 बाई 4. बाय द वे मैंने 4 और u में थोड़ा डिफरेंस समझ लेना, मैं उस टाइप से नहीं बना रहा हूँ. अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी. ओके, 4. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 जो 16, और ये 13 आ गया. 13u बाई 16 कॉमा यहाँ कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 दैट इज़ प्लस 3 रूट 3 u बाई 16. ठीक है, अब देखो पार्टिकल का डिफ्लेक्शन पूछा है ना, तो यहाँ से tan थीटा हमने माना है, तो tan फाई ले लेते हैं. tan फाई कितना हो जाएगा? y बाई एक्स, राइट, दैट इज़ हाउ मच? 3 रूट 3 बाई 13. tan, बट ऑप्शन में आपका साइन दिया है ना, दे वेंट अ स्टेप अहेड, तो इसका हाइपोटेन्यूज निकल आएगा. 3 इंटू 3 9, 27 प्लस 169 विच विल गिव यू 196, दैट इज़ 14, राइट, रूट ऑफ 14. सो आपका आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इनवर्स ऑफ दिस, राइट. सो पहला ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. देखो सेकंड ऑप्शन में, ओके, सो वेलोसिटीज आर दिस, राइट. नाउ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, yeah, when you have too many options you get confused which one to choose. Let me choose the weird one. Half mu square, right? This is the initial kinetic energy, total initial kinetic energy. Disk was at rest, disk तो रेस्ट पे था, तो टोटल पार्टिकल वाला ही काउंट होगा. फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल, लाइक टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट? दिस वन ना, पार्टिकल का. तो इसमें देखो यू स्क्वायर तो आएगा ही, तो मैं हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ. अंदर क्या बचा? एक 169 बाई 16 इंटू 16 256, राइट, प्लस
कितना गया, ये 3 3 ज़ा 9 27 प्लस 27/256, ठीक है। ये तो पार्टिकल का हुआ, प्लस हाफ mu²। सी डिस्क की भी वेलोसिटी आई है ना कुछ 3u/8, तो ये 9/64, 9/64 u² मैंने इधर ले लिया जस्ट टू मेक आवर लाइफ बिट ईजियर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ओह सॉरी, ये 9 नहीं है, 9 × 3 27, अभी आंसर नहीं आता तो फिर भी उठा 3√3 का स्क्वायर, राइट, 27। ये हो जाएगा 16 6 2 8 1 9, ये 196, इसको और इसको जोड़ा और प्लस 27, कितना आ जाएगा। ओह 8 8 जा, ठीक है। एट है ना यहाँ पे, सॉरी ये 9 ही था, मैं वही चेक कर रहा था कहाँ पे कुछ ख़राब हो रहा है। बाय द वे आई हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर बिफोर एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो वही 3√3 नहीं है, वो 3u/8 था, तो उसका 8 8 जा 64, एंड इसको जब बेस 256 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 64 चौका 256 ना, 4 9 36, तो ये 196 आया, इसको इसको जोड़े 196 प्लस 36, तो ये जोड़ोगे तो 6 6 12 एंड 9 3 12 1 13 1 1 2 232। बेसिकली ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया हाफ mu² इंटू 232/256। या मैथ है, कर लेना ये, ठीक है। यू डोंट हैव टू फॉलो मी एग्जैक्टली जो मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है। मैंने एक बार किया है तो मे बी मैं कुछ शॉर्टकट कर रहा हूँ। एनीवे, सो क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन पे। सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो कितना लॉस्ट हुआ, तो पहले लॉस्ट निकालना पड़ेगा। लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाज हाफ, तो कितना हो जाएगा, हाफ mu² कॉमन ले लो। लॉस्ट की बात हो रहा है तो ऑफकोर्स इनिशियल वाला बड़ा होगा, 1 माइनस 232/256, दैट्स वाई आई केप्ट दिस साइड। एग्जाम में भी ये थोड़ी सी चालाकी आपको करना होगा, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, बट यस, हाफ mu²। 256 में से 232 घटाओगे तो कितना आएगा, ये लगभग ये 24, राइट, हाँ 24/256, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ एनर्जी लॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हाफ mu² को उस साइड ले जाओगे तो लॉस्ट अपॉन इनिशियल, इनिशियल इज हाफ mu², तो कितना हो जाएगा 24/256। तो ये कितना आ रहा है 3/32, 8 से काटो, 8 3 24 और 24, 1 25 8 2 16, ठीक है, 3/32। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी करेक्ट है, सॉरी, या हैंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल रिमेन्स विद इट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के बाद उसके पास, पार्टिकल के पास कितना बच रहा है, तो कोलिजन के पास बस पार्टिकल वाला कितना है, ये वाला, राइट, केवल ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन ओनली, तो ये वाला कितना हो जाएगा 196/256। तो उसका कितना फैक्टर निकालोगे, लेट से एफ डैश हाफ mu² फिर से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 196/256, तो इसको जब करोगे तो 49/64 आ जाएगा, एंड दिस ऑप्शन इज ऑल्सो मैचिंग, ठीक है। लास्ट में फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल विच इज़ ट्रांसफर्ड टू द डिस्क, तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो निकाल लेते हैं, कितना, हाफ m इंटू 3/64। बाय द वे, अगर E1 को XY कोऑर्डिनेट में भी लाओगे तो E1 इज ए यूनिट वेक्टर, राइट, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
वेलोसिटी में, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो 9/64, तो जो लास्ट वाला फैक्टर है कितना है, 9/64, ठीक है, वो आपका ऑप्शन में ही दिख रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो and do subscribe to the channel, share the video with your friends, and I hope I'm able to help you guys with some of the conceptual clarity. Okay, and let me know if you have any doubts by commenting under the video. Okay, thank you, bye.